Students, today we have the third part of the chapter, The Shadow. So, in the second part, we saw that Gojia Pasha, who was a magician and who was going to teach Jigmet how to do magic. So, he put a condition before Jigmet and he completely puzzled Jigmet with his question. And what was the question? He said that in the end of the session you need to leave your soul and leave your body, and you will have to be my slave whole life. So this was the question he made to Jigmet, and Jigmet got confused, but still he decided to be his student. And so let's see what he decides or what he does in the next paragraph. Now Jigmet says, Jigmet उससे कहता है गौजिया पाशा से, क्या कहता है? Let me think it over, he said. He sat down on a chair, his eyes wandered round the hall. It was 10 o'clock in the morning. The sun shone brightly through the doors and windows. He could see the shadows of the chairs and tables and of Gojia Pasha and himself on the floor behind him. So, in 4 lines, what the writer wants to say. The writer says that Jigmet sits there in the hall, वहीं बैठ जाता है, and asks him that give me some time, let me decide, and he sits on the chair. वो बैठकर सोचने लगता है. And then his eyes wandered means stroll, इधर उधर घूम करके देखना. So his eyes take a round of the whole hall. वो hall का पूरा round लेती है. It means he tries to see everything present in the hall. And then he sees the time, it is 10 o'clock in the morning. And then what he sees the sun shone मतलब second form of shine. So shine, shone होता है. So here because पूरी स्टोरी पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ पर शोन यूज़ हुआ है. तो सूरज उगा, ठीक है. सो जब सूरज चमका, when the sun shone brightly through the doors and windows. So when sun starts shining, so the light or the brightness of the sun starts coming through the room and the window into the hall. So जो सनशाइन होती है, ब्राइटनेस होती है सन की, और जो चमक होती है वो विंडोज़ से, हॉल के विंडोज़ से और रूम उस डोर से अंदर की तरफ आने लगी. अब उस रोशनी से क्या हुआ? He could see the shadow of the chair, and because of the sunlight, the shadow of chair, table, Gojia Pasha and Jigmet starts being made. इन लोगों की जो शैडो है, परछाई है, वो बनने लगी बिकॉज ऑफ द सनलाइट. उस हॉल में सारी चीज़ें बनने लगी, इट मीन शैडो बनने लगी. When the term comes to an end, do your pupils go out through this hall? Asked Jigmet. Now he says, okay, when the टर्म इज़ ओवर, जब टर्म ओवर हो जाता है, सो डू योर स्टूडेंट्स, डू योर पीपल्स गो थ्रू दिस हॉल ओनली. उससे कहता है कि क्या जो तुम्हारे पीपल्स हैं, शिष्य हैं, जब उनका टर्म ओवर हो जाता है तो क्या इसी हॉल से होके गुजरते हैं? एंड देन गौजिया पाशा रिप्लाइज येस दे डू. वैसा होता है, हाँ, वो दे गो थ्रू दिस हॉल ओनली. Now the next question he asked, do they leave at this time? Again the next question Jigmet asks him, गौजिया पाशा से पूछता है that do they leave at this time? क्या वो इस समय निकलते हैं यहाँ से? He says yes they do, इसी वक्त निकलते हैं. Very well. अब let's see what in these lines, above lines, what
what Jigmet wants to do, and what he has been thinking while asking these question. We even don't know क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है. Is he planning something for future when his session is over? And what else on besides it, वो क्या सोच रहा है, we don't know. We'll see in the next paragraph or maybe in the next video. So finally, after getting the answers from Gojia Pasha, he hands over the money to him, उसको पैसे दे देता है, and he asks him for form. No, जब हम when we get admitted somewhere, we fill up the form, we put our sign over the paper and we submit the fee. So here also Jigmet उसे कहता है ठीक है, very well, give me the form and I'll sign it. वो कहता है कि मुझे फॉर्म दे दो, I will sign all the documents. Jigmet signed the papers and gave Gojia Pasha the money, and after signing all the documents, he gives all the money to Gojia Pasha for the classes. Classes start next Monday, Gojia Pasha said, closing the door. Now, after filling the form, Jigmet leaves his hall, leaves his place, and while closing the door, जब Gojia Pasha दरवाज़ा बंद करने लगता है, he says to Jigmet that your class will start from Monday, next Monday. The following Monday, Jigmet made his way to his new classroom. Gojia Pasha introduced Jigmet to all the students. They all got busy, and they all got busy with the serious business of learning magic. So when the next Monday comes, जब वो next Monday आता है, then Jigmet goes to Gojia Pasha's school. वहाँ पढ़ने जाता है, सीखने जाता है, and finally he reaches his first classroom. वो classroom में जाता है, and then Gojia Pasha क्या करता है, he introduces Jigmet to all the students, and after the introduction is over, all the students start being busy in their serious business of learning magic. और वो जो मैजिक सीख रहे हैं उस फिर से काम में बिजी हो जाते हैं. And what fun it was! One day he changed them all into different animals. Now Jigmet is talking about the day which was so funny. So what he says about that day, he says that one day what happens, he changes all the students into different animals. वो सारे जो उसके pupils होते हैं उनको अलग अलग जानवरों में बदल देता है. And Jigmet was changed into a tiger. And Jigmet was changed into a tiger. Jigmet tiger में बदल जाता है. Moti is also his classmate, उसका classmate है, and he's changed into a goat, and Shubh changed into a lion, and Bobby into a dog. तो सब अलग अलग जानवरों के रूप में बदल देता है Gojia Pasha. And the whole class resounded with the cries of animals, different animals. And जो पूरा hall है, it starts getting echoed with the cries, with the चिल्लाने की, cries means चिल्लाना, cries of different animals. और अलग अलग जानवर थे और वो सब चिल्ला रहे थे, और इससे क्या हुआ, हॉल गूंजने लगा. So resounded means echoed, ECHO. Now the next paragraph comes. When Gojia Pasha clapped his hand, the animals changed back into human beings. So when their teacher Gojia Pasha claps, what happens? All the animals change into again human beings. वो फिर से human beings में बदल गया. The next day he taught them how to pull bunny rabbits out of hats, and on the third day he taught them how to pull out reams of colored paper from their mouths. So now next day what Gojia Pasha teaches them, वो क्या सिखाता है? He teaches them that how can they pull a bunny, how can pull the bunny means rabbit, जो rabbit के बच्चे होते हैं, how can they pull the bunny or take out the bunny from their
हैट्स, वो कैसे अपने टोपी से ना, यू मस्ट हैव सीन जो जादूगर होते हैं, दे हैव गॉट अ बिग हैट्स ऑन देयर हेड, सॉरी ऑन देयर हेड्स। सो ऐसे ही वो गौजिया पाशा अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को सिखाता है दैट किस मैजिक से वो लोग अपने इस हैट से एक बनी यानी खरगोश का बच्चा निकाल सकते हैं। एंड द नेक्स्ट डे व्हाट ही टीचेस that how can they pull out reams. Reams means a large quantity of papers. कैसे डिफरेंट कलर्ड पेपर, वो अलग अलग सतरंगे पेपर्स कैसे अपने मुंह से वो निकाल सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो टॉट बाय गौजिया पाशा। नेक्स्ट डे गौजिया पाशा ये मैजिक बच्चों को सिखाता है। And so the days and weeks and months passed as the term drew to an end. The boys remembered the papers they had signed. The boy who would leave the hall last would become Gojia Pasha's slave for the rest of his life. Now, what happens? Gradually the time passes and the term is over. The time has come when the condition or the promise which Gojia Pasha made all the students follow. जो गौजिया पाशा ने सारे स्टूडेंट्स से एक पेपर साइन करवाया था, अब उन बच्चों को वो पेपर, वो डॉक्यूमेंट इस पर उन्होंने साइन किए थे, दे ऑल आर रिमेम्बरिंग, सबको याद आ रहा है दैट फाइनली we all have to, one of us who is the end, who is the last person of this hall, वो क्या होगा, उसको इस हॉल का और इस जादूगर का जो गौजिया पाशा है उसका गुलाम बन के रहना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी। सो यहाँ पर क्या होता है, एंड सो जैसे जैसे मंथ्स और वीक्स गुजर गए एंड टर्म ख़त्म हो जाता है, व्हेन द टर्म इज़ ओवर the boys remembered the papers. Now they are remembering the papers which they signed in the beginning, जिस पेपर को उन्होंने साइन किया था। and the boy who would leave the hall last, जो बॉय सबसे लास्ट में हॉल को लीव करेगा, would become गौजिया पाशा slave for the rest of his life, और उसको क्या करना पड़ेगा, गौजिया पाशा का स्लेव यानी गुलाम बनकर रहना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी। So students, this is for today, and now here I want to ask you some questions that did he Jigmet agree with गौजिया पाशा, क्या गौजिया पाशा की शर्त से वो सहमत हो गया। The next question is, when Jigmet's class started, Jigmet की क्लास कब स्टार्ट हुई। And the next question, yes, which was the funniest day for Jigmet? Jigmet के लिए सबसे funniest day कौन सा था उस टर्म का जब उसने जादू सीखा। इफ़ यू रीड दिस पैराग्राफ, अगर आपने इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ा तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। हाउ डिड ही गौजिया पाशा चेंज ऑल द एनिमल्स इनटू ह्यूमन बींग्स, क्या एक्टिविटी करी थी गौजिया पाशा ने सारे एनिमल्स को ह्यूमन बींग में चेंज करने के लिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हेन द टर्म इज़ ओवर फॉर व्हाट ऑल द बॉयज़ आर थिंकिंग, जब टर्म ओवर होता है तो सारे बॉयज़ क्या सोच रहे हैं। व्हाट इज़ हिज कंडीशन, जो गौजिया पाशा थे उसकी क्या कंडीशन थी। So these all questions you need to answer when you finish out the video, so that you can understand that you are doing formalities only with the videos, formality कर रहे हो या फिर seriously you're watching.
right? So children, thank you so much.